Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay Guru. So guys, now I'm here with one important video for you again, and that video it all talks about how to strategize ourselves for the next 70 days as in ठीक है वीडियो का टाइटल ही रखा है strategy for last 70 days okay and that as you much aware about okay UPSC preliminary examination 2025 is going to held on 25th of May 2025 so that is now our target date. And now what I am considering we are now trying to plan ourselves this further how to proceed from 15th of March 2025 till 25th of May 2025. I'll give you the total time sheet as well कि कैसे manage करना है. I'll equally give you how to manage with the subject and the time duration as well in terms of total hours and everything as in. So in this video I'm trying my like best to give you a kind of strategy जो आपको next 70 days में follow करनी है. ठीक है, you may consider 75 days as well, but मैंने जो रखा है वो 70 days वाली overall strategy रखी है. First thing that what I want to make it pretty much clear over here. See guys, now 70 days है हमारे पास and you are expected to study 10 to 12 hours every day. See now this is much crucial time. तो अब हमें टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. द थिंग इज कि अभी अगर नहीं करेंगे तो दैट इज व्हाट गोइंग टू बी द वेस्ट ऑफ ऑल दोज एफर्ट दोज वी हैव टेकन. सो इट्स नाउ 10 to 12 और पॉसिबली अगर आप ज़्यादा कर सकते हो दैट इज एडवाइजेबल बट या कंसिडरिंग ऑल आर फिजिकल मेंटल नीड एज वेल. ठीक है, 10 to 12 इज मच डूएबल थिंग. सो डू एंश्योर कि आप ये चीज़ कर रहे हो एंड ऑलमोस्ट इन दैट केस यू विल लैंड इट अप स्टिल हैविंग इन टर्म्स ऑफ आर 700 to 840 या 850 hours. See guys, 700 to 850 मतलब मैं तो इसको 800 plus hours consider करूँगा that you guys should have with you. So it's rather 800 plus hours that still left with you guys and you have to strategize it just accordingly. Okay, see now the skill of administrator because we are all aspire to become like an administrator. तो हमारे पास ये skill होनी चाहिए. We have limited resources with us. ठीक है, हमारे पास resources जो है वो limited है. So obvious सा case है now having with limiting resources now we should utilize it optimally. अगर हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे ओवर इन द डिस्ट्रिक्ट ओवर इन दी मिनिस्ट्री या जो भी प्लानिंग प्रोसीजर कर रहा है यू विल फाइंड कि आपकी जो मतलब फॉर व्हाट पर्पस यू आर हायर्ड फॉर दैट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल है ना. तो फिर परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होगा. सो ओवर हियर नाउ दैट स्ट्रैटेजी दैट स्किल वी आर सपोज टू इनकलकेट इन आवरसेल्फ ओवर इन दिस प्रिपरेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो टाइम हियर आई बिलीव इज आवर रिसोर्स एंड वी हैव टू यूज इट सो जुडिशियसली, वी हैव टू यूज इट सो कॉशियसली जिससे क्या होगा हमको बेस्ट रिटर्न्स इसके मिल सके. ठीक है, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योर फर्दर 800 hours as in. Okay, so now see for the purpose of preparation guys what there are more important points most important points or aspect or areas of our preparation. Those are what being listed based on my understanding. ठीक है, someone may argue कि सर ये point नहीं हो सकता ये point हो सकता है but believe me guys these are the most important areas जो हमको focus करने हैं during the preparation of the prelims examination and even for the rest of the phases of the UPSC examination. So the first phase is with respect to the basic or reference book. See whatever guys there are number of sources available in the market but I believe basic is really a basic that gives you a required foundation and that basic is what ultimately going to help you in the exam. ठीक है, so do ensure what you are doing you are preparing your basic in pretty much required detail जिसमें 2 to 3 readings at least. Okay, you guys would have at least 2 to 3 quick reading I am talking about. ठीक है, of this
बेसिक रिसोर्स, राइट। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होगा, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज होगी, जीसी लियोंग होगा, हिस्ट्री के लिए आर्ट एंड कल्चर वाले जो एनसीईआरटीज है हमारे या बुक्स है, और भी जो रिक्वायर्ड जो कंटेंट होगा मटेरियल, सो वी आर सपोज टू go through it 2 or 3 times, and that is what a quick, because considering the time as a resource and restrictions, now 2 to 3 readings यहाँ पे होनी चाहिए. See guys, there is no alternative actually for the case of this reading itself. ठीक है, करनी ही पड़ेगी, because in one reading we are not going to have the enough understanding about this case. तो आपको ये चीज ensure करनी. The next, the most important, I would say, in the course of UPSC preparation and the prelims examination, particularly this PYQ. See, PYQs को सिर्फ read करना is not expected. You are supposed to analyze PYQs. You are supposed to analyze its options, those were asked, and equally you are supposed to analyze the very strategy of framing that particular question. जो भी क्वेश्चन आया हो, करंट से कितना बेस्ट है, ऑप्शंस कितने हैं, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कितने करेक्ट है, या ये जो स्ट्रैटेजी ये कैसे इवॉल्व हुई है, या की वर्ड्स पे कैसे इन एंड अराउंड खेला है, या एक्सट्रीम वर्ड्स के इन एंड अराउंड कैसे खेला है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी अडेप्टेड बाय द फ्रेमर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, दैट इज व्हाट अल्टीमेटली यू विल लैंड अप इनटू एग्जामिनेशन जहां पे आपने सिर्फ मेयरली नॉलेज लिया है, राइट. देयर इज इक्वली रिक्वायर्ड स्ट्रैटेजी, है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स है जो आपको पीवाईक्यू से आ सकते. तो एनालिसिस और प्रिपरेशन इंटीग्रेशन मस्ट बी देयर. Then the most important aspect, that is revision. See guys, what I personally believe, right, based on my experience, what is topper? Topper, I believe, is like equals to revision, because the more you revise, more you able to keep those things in your mind. The more you able to keep these things in your mind, concepts and the facts as well, more you will able to analyze, and more you will able to comprehend and apply it over on the ground, right, required question as well. So the thing is, revision is rather very key aspect. Our preparation 10 to 15% time, or possibly more, it should be given to this aspect और इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ रिवीजन. ठीक है, ये करना ही पड़ेगा. मैं ये सारी आपको एरियाज बता रहा हूँ जिसको हम टाइम के शीट पे, है ना, अकॉर्डिंगली प्लॉट करेंगे. देन नेक्स्ट इज सीसैट. नाउ गाइस, सीसैट इज रादर अ गेम चेंजर, आई वुड से गेम चेंजर. सी 17, 18, 19 तक सीसैट वॉज मेयरली ए क्वालिफाइंग पेपर. ठीक है, मेयरली क्वालिफाइंग पेपर, कि इसका जनरली लेवल उस टाइम पे हुआ करता था 8 to 10th लेवल, और पेपर क्वेश्चंस वेर प्रीटी मच ऑफ इजी कैटेगरी. बट आफ्टर 2020, इफ यू कैन गो थ्रू हैव गॉन थ्रू द सीसैट पेपर, बिलीव मी गाइस, अब जो क्वेश्चन है वो कैट लेवल के क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन है. And in order to solve those questions, you need some basic clarity and understanding. So instead of merely formula based solving of the paper, do remember that you are focusing enough on the basics of the CSAT या quantitative and mathematics aptitude वाला जो comprehension वाला केस है. So you are supposed to go through this aspect in all thorough required detail. The second last, in fact, that is the current affair. See guys, that is very much important, right, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे वो क्वेश्चंस आएंगे कि जो पास्ट ईयर बेस्ड एग्जामिनेशंस के होंगे. ठीक है, करंट अफेयर्स में जो होंगे. सो करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली 1 to 1.5 years वाला, राइट, करंट अफेयर्स वी आर सपोज टू, और वो हम अगर डेली न्यूज़पेपर भी रीड किया है, सो मैगजीन रादर वुड गिव यू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ this particular current affair. And the last and not the least, in fact I would say rather most important, that is mock test. If you want to bleed less over in the in the war, you have to sweat more before the war itself. ठीक है, so mock test is simply जहां पर हमको प्रैक्टिस होगी, है ना, ऑल प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, यू विल फाइंड टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स, है ना, practice of what, you will find how to understand and analyze the various questions, right. So you will find कि practice or mock test would rather give you this much of understanding. So mock test is really much important. How many mock tests? You will find कि एक generally sectional test, still we have time enough कि हम sectional test भी लगा सकते हैं, attempt कर सकते हैं. So sectional test may be somewhere around 20 plus minus हो सकते हैं, and then full length test, right, where 10 to 15 full length tests we are supposed to attempt. So in total
30 to 35 40 टेस्ट वी आर सपोज टू अटेम्प्ट इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। 800 आवर्स है हमारे पास और 800 आवर्स को इस वे से स्ट्रेटेजाइज करना है दैट you will get the right amount of what preparation and ultimately the result. Now when it comes to plotting it on the time sheet, time sheet, तो देखो time sheet या time chart. Now see, this is what I have planned it for. Over here 45% of your preparation time I believe it should be given to even today basics or fundamentals, right, जिसमें हम quick 2 to 3 readings क्लियर करेंगे, ठीक है। क्विक रीडिंग्स वी आर सपोज टू कंप्लीट। देन इन द नेक्स्ट लाइक 10% ऑफ आवर टाइम, तो 800 का 80 आवर्स ऑलमोस्ट डाउन अभी भी हमको देना है PYQs सॉल्विंग पे, PYQs एनालिसिस पे, PYQs अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। सो दैट्स वन। देन CSAT 15% ऑफ टाइम। नाउ बट व्हाट आई वुड लाइक टू मेक इट ओवर हियर, डोंट डू इट लाइक दिस 15%, मतलब कितना हो गया ये, अगर वो देखोगे तो 120 प्लस आवर्स, राइट, यू विल फाइंड। डोंट गिव दिस 120 प्लस आवर्स लाइक इन वन स्ट्रेच या इन वन गो। Do make it sure that you will rather divide this 120 hours on daily basis. So how much it comes then, अगर इसको हम 70 days के टर्म पे अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 1.5 hour to 2 hours you will find on daily basis. And see guys, doing something on a daily basis is kind of energy. तो क्या होगा, जो आप लर्निंग ले रहे हो in the previous day या yesterday, you will able to apply in the next day, right, and the next upcoming preparation or solving also. So you have to ensure कि आप ये सारी चीजें कर रहे हो for the purpose of CSAT. Don't do it on a single stretch like in that way preparation. Then the revision, the most important aspect again, we have 15% of our dedicated time to 100 to 120 hours अभी भी हमारे रिविजन पे। किस चीज की रिविजन? The basics, then current affairs, and then mock test you have given. See, mock test की revision is equally important. The reason being क्योंकि वहां से भी बहुत added content मिलेगा आपको, information मिलेगी और techniques भी मिलेगी जो आप otherwise सिर्फ solve कर लोगे तो that is not going to be with you. So you have to ensure this fact कि mock test की भी आप revision कर रहे हो, and that is what the allotted time is, 10 to 15% of time, and then the mock test itself, ठीक है। So 15%, so 15% you will find it's almost comes 120 hours, and I believe 120 hours में हम 60 टेस्ट दे सकते हैं, बट व्हाट आई स्टिल कंसीडर 40 टेस्ट हम देंगे और इस टेस्ट के एनालिसिस का भी टाइम जो है हमारे पास है ना, सो वो टाइम भी 40 आवर्स हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो 40 टेस्ट एंड 40 आवर्स ऑफ एनालिसिस, दैट इज व्हाट दिस टेस्ट इज सपोज टू। Okay, so that is what the time sheet in total, how we are supposed to prepare, allocate this 800 hours, yeah, 70 days. Now in terms of monthly time frame, then how we are supposed to prepare, ठीक है। मैंने मतलब सारे वेज से इसको प्लॉट किया जिससे आपको ना सारी हेल्प मिल जाए, ठीक है। जैसे now we are at the 15th of March if you consider, and target date is 25th of May. So I have plotted it on some different time divisions. देखो, जिसमें 15th of April is our next target date, जिसमें ऑलमोस्ट 30 डेज हमारे पास मिल रहा है, ठीक है, 30 डेज है। एंड ओवर हियर व्हाट वी आर सपोज टू, अभी भी हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, बेसिक्स की रीडिंग करेंगे, रिवीजन करेंगे, ओके। देन PYQ एनालिसिस अभी भी हम नहीं छोड़ेंगे, सो दैट इज व्हाट, एंड सेक्शनल टेस्ट वी आर सपोज टू अप्लाई अलोंग विद द एनालिसिस, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू, सो बाय 15th of April वी विल हैव दिस मच ऑफ प्रिपरेशन विद एंड करंट अफेयर्स वी आर डूइंग ऑन डेली बेसिस। CSAT भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो 1.5 hour, एंड दैट इज डुएबल, मच डुएबल। डोंट बी लाइक सर इतना नहीं हो सकता, सी अगर ये नहीं हो सकता तो फिर दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। सो 15th of April से 1st of March you will find then the next 15 days what we are supposed to, we are now giving it for the purpose of revision. अब जो रीडिंग करनी थी वो हमने कर लिया, अब उसका क्विक रिविजन करती चलनी है। देन फुल लेंथ टेस्ट वी हैव टू ऑलमोस्ट 10 to 12 full length tests we are supposed to attempt over here along with their analysis. CSAT is again cannot be avoidable, so that one, and current affairs. Then for next 1st of May to the 20th, 25th, 22nd of May, now individually it may vary, but almost around for this 20-25 days revision, again revision of basics जो करते ही रहनी है हमको, एंड देन टेस्ट as well, ठीक है। तो टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है जो अभी भी हमको कंटिन्यू करना है, जो अभी बचे हुए 10 टेस्ट होंगे, सो दोस फुल लेंथ टेस्ट वी विल बी अटेम्प्टिंग, एंड देन CSAT, that is we need to continue with the
CSAT. That is a much needed, much important point to focus upon. So in the 20 days we are supposed to prepare, and then the next or key days, I will rather say, most crucial day, be relaxed. या जनरली क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं कि सर अब एग्जाम आने वाली है, तो नाउ वी हैव टू डू लॉट मेनी थिंग्स ओवर देयर, जो बचा है, जो ये किया है, वो करना है. नो, एब्सोल्युटली नॉट. बी रिलैक्स ओवर. देखो, अभी तक जितना किया है उतना ही एग्जाम में जाके प्रेजेंट कर सकते हो. द थिंग इज, इन दिस लास्ट 2, 3, 4, 5 days you are not going to do anything extraordinary or revolutionary in that way. Do ensure whatever you are doing, do ensure whatever you have you have done till this moment of time, you are supposed to assimilate that knowledge only, right? So in the last 2, 3, 5 days I would prefer to बी रिलैक्स, राइट? कुछ नहीं करना है, जो कुछ होना था वो हमने पहले कर लिया है. बी रिलैक्स एंड बी विथ ए रिलैक्स माइंड. अल्टीमेटली बिलीव मी, वॉट एवर जो एग्जाम में आएगा आपको, वो अभी तक के प्रिपरेशन पे ही आएगा. लास्ट के 3, 4, 5 दिन कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल योर माइंड इज पीसफुल, स्टेबल, काम एंड कंपोज्ड. Okay, so do ensure this thing, and at the exam day I'll make that video already बनाया, मैं और भी बना दूंगा आपको, right, कि आपको कैसे exam day strategies करनी है last 2 to 3 days के लिए. Okay, so I believe this 800 hour strategy, right, for this prelims examination is pretty much clear too. Now there is enough flexibility कि आप इसमें अपनी भी कुछ accordingly add कर सकते हो चीजें, but I have tried कि मैं आपको best strategy दे सकूँ. ठीक है, so this is all about from my side for the significance of the sources, time sheet and the time plotting as well. That is what I have made for. I wish you all the best for for examination, and thank you for watching this video till this end. I wish you all the best. If you like it, so share it with your friend and subscribe to our channel. Thank you.